औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम-ओ-अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जनरल नॉलेज के MCQs शेयर करने जा रही हूँ जो PMS 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखते हैं तो इंशाल्लाह मैं जनरल नॉलेज का जितना भी सिलेबस है वो सारा आपके साथ शेयर करूँगी। कंप्लीट हम उसको कवर करेंगे। अगर ये तमाम MCQs को आप गो थ्रू कर लेते हैं तो आप लाजमी तौर पर जनरल नॉलेज के पेपर को पास कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन तमाम लेक्चर्स को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये पार्ट 1 है और इससे पहले मैंने एक पास्ट पेपर सॉल्व हुआ आपके साथ शेयर किया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं तमाम पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि बाकी सिलेबस के साथ साथ मैं पास्ट पेपर्स के MCQs भी सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था पाकिस्तान का? कायदे आज़म। सेकंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। थर्ड मलिक ग़ुलाम मोहम्मद एंड फोर्थ सिकंदर मिर्ज़ा। और फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा, सेकंड फील्ड मार्शल अयूब ख़ान, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नूरुल अमीन एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन एंड थर्ड मोहम्मद अली बोगरा। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब सर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद। फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान वाज लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान वाज सरदार अताउल्लाह खान मेंगल। First Chief of or Commander-in-Chief of Armed Forces Frank Meserve. First Chief of Army Staff General Tika Khan. First Naval Chief Commander-in-Chief Admiral Gifford James Wilfred. First Chief of Naval Staff Admiral Muhammad Sharif. First Commander-in-Chief of Air Force Elan Perry-Keen. First Chief of Air Staff Zafar Ahmed Chaudhry and first Chairman Joint Chief of Staff Committee General Muhammad Sharif. Now current Governor of Punjab Muhammad Balighur Rahman. Current Governor of Sindh Kamran Tisori. Current Governor of KP Haji Ghulam Ali and current Governor of Balochistan Abdul Wali Kakar. First session of First Constituent Assembly was held on 10th of August 1947 in Sindh Assembly Building, Karachi. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was elected as President of Constituent Assembly on 11th of August 1947. Qaid-e-Azam sworn in as first Governor General of Pakistan on 15th of August 1947. First elected President of Pakistan Major General Sikandar Mirza. First martial law on 7th of October 1958 by President Sikandar Mirza. Second martial law 25th of March 1969 by Yahya Khan. Third martial law 5th of July 1977 by Ziaul Haq. And Federal Council was constituted by the President under Presidential Order on 24th of December 1981.
When All Indian National Congress was established in 1885, when All India Muslim League was established 1906। ये तमाम डेट्स आपने लाजमी याद रखती हैं, इनमें से कोई ना कोई MCQs में पूछी जाती है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, मॉन्टेज चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22, नेहरू रिपोर्ट 1928, Jinnah's 14 point 1929, and round table conferences. First round table conference November 1930 to January 1931, second round table conference September 1931, and third round table conference November to December 1932. Congress Ministries July 1937 to October 1939, and Quit India Movement August 1942. Now इनमें से कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, दोबारा से इनको पढ़ लेते हैं। हु वाज पाकिस्तान्स फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, फर्स्ट चीफ जस्टिस जस्टिस अब्दुल रशीद, फर्स्ट प्रेसिडेंट जनरल सिकंदर अली मिर्ज़ा, फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी जनरल सर फ्रैंक मेजरवी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाहिद हुसैन, फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ फेडरल कैबिनेट बेगम विकारुन्निसा नून, फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा जेतोई, फर्स्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम, and first chief executive general Pervez Musharraf, and who was awarded Lenin Prize Faiz Ahmad Faiz, who was poet। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह डेली बेसिस पर मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप इन MCQs को ज़रूर अपने पास नोट डाउन करें, सीक्वेंस में इनको लिखें जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि MCQs तभी याद होते हैं अगर आप उन्हें उन इवेंट्स को सीक्वेंस में लिखते हैं तो, वरना वो चीज़ें आपको भूल जाती हैं। और जनरल नॉलेज का ही वो पेपर है PMS का, जो सबसे ज़्यादा जिसका खौफ होता है स्टूडेंट्स को, किसको हम किस तरह से पास करेंगे। एक तो ये कि उसमें सिर्फ MCQs होते हैं, दूसरा ये कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और वो कंपल्सरी सब्जेक्ट भी है, तो थोड़ा टफ़ होता है बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत। सो इसको बहुत ध्यान से लेकर के चलना है और इन तमाम टॉपिक्स को जो कि सिलेबस में दिए गए हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस के लिए, उनको कम्प्लीटली कवर करना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।